स्टूडेंट्स, मैं रूपम गुप्ता एक बार फिर से. I hope you liked my first video and you have understood the electron dot structure of covalent compounds. Few examples. Today we are going to practice few more examples for the electron dot structure of covalent compounds. But for that, once again you need to recall which I have told you. Hydrogen forms one bond, oxygen 2, nitrogen 3, and if you will recall, you will find once again halogen also 1, and sulfur, phosphorus exceptionally brilliant. So sulfur can form 2, 4, 6, phosphorus can form 3 and 5. This is the number of possibilities of the bond formation by these elements. In the previous video, hydrogen, oxygen, water, these examples we have done on the same methodology. Let us discuss today few more examples. For example, H2SO4, sulfuric acid. In this, sulfur will be the central atom. As we have discussed earlier, first of all we need to make bond structure. हम सबसे पहले bond structure बनाएंगे. सल्फर हमारा सेंट्रल एटम है एंड वी नो दैट ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 bonds. We have written here, है ना. And now with this sulfur, as we know, 2, 4, 6, all possibilities are there for the bond formation. So with this sulfur, oxygen and oxygen. Okay. Now we see oxygen can form 2 bonds, but here it is only 1. So we can make here double bond. Okay. अभी कुछ याद आ रहा है? What we will do now? This is the bond structure which we have drawn. Very simply, we just need to remove this bond imaginary, not exactly. And here we know that there are 3 elements: hydrogen, sulfur and oxygen. So we need to choose. Suppose for hydrogen I want to present the electron by cross. For sulfur we are choosing by dot, and for oxygen once again we are choosing by cross. Simply put the values, that's it. As we discussed, imaginary removal of the bond. Hydrogen by cross, oxygen also by cross, this oxygen once again by cross, this sulfur by dot. Okay, so this side also for sulfur by dot, and oxygen as we thought by cross. So easy. In this also again we are removing the bond, dot, cross. In this also let us remove for sulfur dot, for oxygen cross. I hope this is just like a game. What are we doing? हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिंपली बॉन्ड्स को इमेजिनरी फॉर्मेट पे रिमूव करते जा रहे हैं एंड उनकी जगह पे हम इलेक्ट्रॉन्स वैल्यू पुट करते जा रहे हैं. सो दिस इज, आई होप यू विल फील इट वेरी इजी मैथड. ऑक्सीजन वंस अगेन क्रॉस, हाइड्रोजन ऑल्सो बाय क्रॉस. ओके, देन आई टोल्ड यू व्हाट टू डू. इंस्टेड ऑफ मेकिंग द बिग सर्कल्स एंड मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड, वो बहुत मैसी हो जाएगा. सो व्हाट कैन वी डू इन दिस? Just encircle the bonds. That is also sufficient, so that we can highlight that yes, this is the bond. Encircle it. Now don't forget to follow the third step. भूलना नहीं है, हमें octet rule हमें check करना है. For this hydrogen 2 electron, done. For this oxygen, check 1, 2, 3, 4. 4 electrons are already there in the sharing with oxygen. 4 more to be drawn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Done. Okay. With this oxygen, चलो अब इस ऑक्सीजन का पेट भरते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Octet complete. This oxygen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. See, so simple. Counting just only we are doing. For this oxygen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. For this hydrogen it is done.
So this is our electron dot structure of H2SO4. What is the common mistake which generally students are doing? See, we decided for oxygen cross. Okay, for oxygen cross. Sometimes, because I am checking copies of CBSE from last 10 years, so what common mistake I find? 1 2 3 4 5 6 7 8 4 electrons और लगाने, 4 more electrons. So generally students put this way. Now you see, you all are brilliant enough to know similar charges, similar negative charges. Do you think that all negative charges can be together? Will they not repel each other? There will be a great repulsion. So this is never possible. We need to take care of it. 1 2 3 4 5 6 7 8 electrons this way. Another thing, sometimes you people may forget. आप छोटे बच्चे हो, कभी कभी भूल जाते हो. What you do, हमने यहाँ क्रॉस से प्रेजेंट किए इलेक्ट्रॉन्स, बट व्हेन वी प्रेजेंट अदर इलेक्ट्रॉन्स, सो इंस्टेड ऑफ क्रॉस समटाइम्स वी पुट डॉट बाय मिस्टेक. टेक केयर अबाउट दोज सिली मिस्टेक्स इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन एग्जाम. So this is our final electron dot structure of H2SO4. I hope you have understood it. Few more examples. This is inorganic compound. Now one organic compound we will practice. Okay. You can practice any compound here, you can practice any example, but you must know whether it is covalent bond, whether electrons are in sharing mode or not. Otherwise, if you will draw this way, ionic bond, आपने ionic bond के compounds को ऐसे draw किया तो completely wrong. So we have done H2SO4 also. Next example, as I told you, carbon compound, which is very easy, CH4. You know what is the CH4's name? Methane. And the common name of methane is marsh gas. The reason is it is found in the marshy areas. Marsh क्या होता है? दलदल. सुना ना कभी मूवीज में देखते एक बार फंस जाते तो फंसते ही चले जाते. That is marsh. And this CH4 methane gas is produced there in that marshy area. इसलिए हम इसे marsh gas कहते हैं. कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4. टेट्रा कोवेलेंसी. बन गए 4 बॉन्ड्स. कार्बन इज सेटिस्फाइड एंड विद ऑल 4 बॉन्ड्स हाइड्रोजन शुड बी देयर. चलो काम शुरू करते हैं. व्हाट? इमेजिनरी रिमूवल ऑफ द बॉन्ड एंड पुटिंग द इलेक्ट्रॉन्स. वंस अगेन remove this electrons, remove this electrons, remove this electrons. कार्बन तो बड़ा खुश है भाई, because you see 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का काम कंप्लीट. दिस हाइड्रोजन 1 2 शेयरिंग. तू मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे, मैं तेरे को एक इलेक्ट्रॉन दूंगा. सो कार्बन इज गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इज ऑल्सो शेयरिंग. दिस हाइड्रोजन इज ऑल्सो फॉर्मिंग 2, this hydrogen is also gaining 2, this hydrogen also got 2 electrons, and CH4's electron dot structure is also complete. Enjoying? Do you feel this is very tough science, robotic science? It is so easy. कुछ नहीं कर रहे हैं हम, bonds बना रहे हैं और bonds हटा रहे हैं, बस bonds की जगह पे electrons लगा रहे हैं, that's it. One more example. With the same carbon itself. Okay. Now we will see C2H6. Interesting. C2H6. चलो भाई शुरू करते हैं. कितने कार्बन? 2. 2 कार्बन है इसमें. Always remember, whenever there are carbon in any group, first of all join those carbon with the bond. Like if there are 2 carbons, both the carbon must be joined with a bond. We have joined it.
नाउ फुलफिल हाइड्रोजन विद द वैलेंसी ऑफ कार्बन। अब कार्बन का पेट भरो। पहले हमने कार्बन को कार्बन से ज्वाइन कर दिया, अब चेक करते हैं कार्बन की और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। स्केलेटन वी फ्रेम्ड, अब इसका डेकोरेशन शुरू करते हैं। हाइड्रोजन वैलेंसी ऑफ कार्बन, अब तक तो सबको रट गया होगा, कार्बन 4 बॉन्ड्स, दिस कार्बन 4 बॉन्ड्स, लगाओ हाइड्रोजन्स, डन। कर लेंगे, अब शुरू हो जाओ। बॉन्ड रिमूव्ड, इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड रिमूव्ड, बॉन्ड रिमूव्ड, बॉन्ड रिमूव्ड, बॉन्ड रिमूव्ड। अब तक तो टिप्स पे आ गया होगा आपके। बॉन्ड रिमूव्ड, बॉन्ड रिमूव्ड, ऑक्टेट रूल। चलो, कार्बन already all 8 electrons, sorry this electron, don't forget this also ना, कहीं दूर है तो आप लोग भी भूल जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 for this carbon, check 1 2 3 4 5 6 7 8, now hydrogen's chance 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. You can choose another method also in which I have only encircled the bonds. I will show you that also. First, if you have noted this, चलो अब मैं आपको थोड़ा सिर्फ बॉन्ड्स को एनसर्किल करके भी समझा देती हूँ। दोबारा से लिखते हैं स्ट्रक्चर, साइड में थोड़ी छोटी स्ट्रक्चर बनाते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ कैन वी ड्रॉ दैट। बॉन्ड रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन्स लगाए, बॉन्ड रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन्स लगाए, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितना मज़ेदार है। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, एंड द कंप्लीट केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू जस्ट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन्स। यही चलता है पूरी केमिस्ट्री में। Now only encircle the bonds. So this is the bond, encircled, this is the bond, encircled, this is the bond, encircled, this is the bond. चलो भाई encircle फटाफट। See, hydrogen 2 done, hydrogen 2, hydrogen 2, hydrogen 2, hydrogen 2, hydrogen कितना छोटा सा है ना बेचारा, जल्दी पेट भर जाता है। कार्बन 2 plus 2 plus 2 plus 2 all 8. This carbon 2 plus 2 plus 2 plus 2 all 8. So electron dot structure of ethane gas C2H6 is also completed. Okay, आपको दूँ थोड़े से examples, चलो along with me you start doing it. Next example which I want to give you is C. Check carefully. Again I am choosing 2 carbon, but this time हाइड्रोजन ज़रा कम पसंद आ रहे हैं मुझे। Instead of H6 I have written H4, C2H4. Earlier there were 2 carbon and 6 hydrogen. Check the difference. This time there are 2 carbon and only 4 hydrogens. That means हमने 2 हाइड्रोजन कम कर दिए। Remember it. अब क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा ना, बिकॉज कार्बन की वैलेंसीज तो वी नीड टू फुलफिल। व्हाट कैन वी डू? अगेन सेम, as I told you earlier, 2 कार्बन्स 4 हाइड्रोजन, हमें सिर्फ 4 ही हाइड्रोजन जोड़ने। अब क्या करें, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन तो मैंने जोड़ दिए, 4 हाइड्रोजन 1 2 3 4 आई हैव एडेड। कार्बन 2, कार्बन 2। डू यू फील समथिंग इज मिसिंग? चेक करो, कार्बन टेट्रा कोवैलेंसी 1 2 3 बॉन्ड, अब एक बॉन्ड तो मिसिंग है, 1 2 3 एक और बॉन्ड मिसिंग है। कार्बन शोज
double bond also. This we will discuss about the versatile nature of carbon in another video, in the just next video. But you see there are double bond between these two carbon. अब ठीक है गेम, कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 1 2 3 4, काम खत्म. अब कर लेंगे हम इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कुछ नहीं करना है. वंस अगेन आप बॉन्ड्स रिमूव कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर दीजिए. So beautifully done. Just dot and cross, just dot and cross, and circle the bonds, and circle the bonds. ऑक्टेट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है. 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. शॉर्ट एलिमेंट्स में, स्मॉल एलिमेंट्स में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. 1 2 खत्म, 1 2 1 2 1 2. हाइड्रोजन एज यूजुअल जल्दी पेट भर जाता है. कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 डन. विद दिस कार्बन 1 2 3 4 5 6, कुछ मिसिंग हुआ? 7 8 sharing electrons, don't forget. 1 2 3 4 5 6 7 8 done. This electron dot structure is also completed. You will practice now at your own ethyl alcohol C2H5OH and ethyl chloride C2H5Cl. For your help, I have drawn bond structure. You fill hydrogen there. Whenever we leave any bond blank, it means hydrogen is there. It is understood. Okay. So this is the task. Till my next video comes to you, you complete these bond structures with the hydrogen and convert them to electron dot structures. If you find any difficulty, please write in the comment section of my YouTube channel, and please don't forget to share, like and subscribe definitely, so that I'll also feel happy that yes, my students are liking my videos a lot and they are getting some benefit. See, I'm giving you some easy tricks, not going into the depth, so that you can score good. This is my first motive for you all. Because of this pandemic situation, we are not in direct connection, we are not meeting directly. So I am trying my best to make something easy for you, so that you can gain good marks without panicking. Thank you so much, children, for keeping patience and watching. Thank you.